Welcome back to my channel, guys. This is chaotic.buddhaa. So we are going to draw today old man. I already chosen a reference for that. So let's start. देखते हैं कैसे कर लेते हैं हम. Let's start. So as we already discussed, we need a eye line or a center line or a basic proportion on page from where to start and where to end it. As we have discussed, we have to mark the shadow areas first, because in charcoal it's very important to mark the darker areas. आई थिंक विलो चारकोल का काम हुआ है. इतने में विलो चारकोल को थोड़ा सा रुकवाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉम्प्रेस चारकोल. आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि दिस इज हाउ माई पिक्चर इज गोइंग टू लुक ऑन द पेपर, एंड यहाँ पर मैं अपने वैल्यूज और प्रोपोर्शंस को आई वांट टू पुट. सो दैट टाइम you can take the charcoal, compressed charcoal, I mean, because it's very tough to erase and very well, it's dark, na? It's very dark. क्योंकि मेरी गलती, जैसे मैंने स्टार्ट किया था when I got introduced to charcoal artists और charcoal art, that time मुझे इतना ही पता था कि they use charcoal. मुझे ये नहीं पता था कि which type of charcoal they use. थोड़ा YouTube पे रिसर्च करने के बाद ही मुझे पता चला कि YouTube, Google,
that there are different kinds of charcoals. So one is willow charcoal, there is another one is wine charcoal. I, I even searched how they are made, but I was not sure about how it works. क्योंकि मुझे लगता था अगर कोयला ही यूज होता है तो व्हाई नॉट every type of coals, but no, there are these coals are made only for drawing purposes. I think he's looking like an old man. I hope so. So हमारा इसका भी काम हो चुका है because we have almost picture is ready. Let's give it a try with this blending stuff. और चारकोल पे काम करोगे और कॉम्प्रेस चारकोल पे काम करोगे तो ब्लेंडिंग स्टफ ऐसी ही होने वाली है, पूरी ब्लैक, ऑल ब्लैक. सो आई विल टेल यू कीप इट लाइक दैट ओनली. इफ यू आर नॉट doing any other work, so keep it, but तुम चारकोल ही करने वाले हो तो keep like this only, because anyway you're पहले मुझे ये तक पता नहीं था. पहले मतलब this year, because I started doing charcoal in this year itself. मुझे ये तक पता नहीं था कि ब्लेंडिंग स्टम्प नाम की कोई स्टम्प होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रिकेट के स्टम्प्स ही पता थे. क्रिकेट में भी इतना कहाँ इंटरेस्ट था, तो स्टिल एटलीस्ट उतना पता था कि क्रिकेट स्टम्प और ब्लेंडिंग स्टम्प अलग अलग होते. So he's looking like a Rumi, the great poet Rumi. Yeah. So अभी ना आई थिंक हमें थोड़ा हाथ से काम करना पड़ेगा, बिकॉज हाथ से मस्त कूल इफेक्ट मुझे तो लगता है. आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू sort out all these things about giving the effect or blending the food, because इतना बड़ा blending चीज़ blending के लिए चीज़ें तो नहीं होता. So look how it's looking right now. This is what happens after charcoal paintings. This is mechanical eraser, and this is for bigger portion. This is for bigger portion. Like
the nose. गलती की तो कोई ना, तुम्हारा ही ड्राइंग, कौन जज करने वाला, खुद ही जज करने वाला, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, वेर इज द लाइट, कहाँ पर लाइट आ रही है, थोड़ा डिटेलिंग वर्क रह गया। सो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मैं करूँ, तो ना, यू गाइस डिजर्व द एवरी प्रोसेस आई डू। This is also a good eraser. I liked it. It's not a bad thing. Actually, मोनो इरेजर कल खत्म हो गया है। Almost the end. This is also good. एकदम फाइन काम करना है आपको, तो इट्स गुड, मतलब रियलिज्म। आई थिंक आईब्रोज निकालने के बाद वी आर डन। डोंट वर्क टू मच ऑन योर स्केचिंग और पेंटिंग, क्योंकि इतना करने के बाद रियलाइज हुआ ना कि डू टू मच ऑफ थिंग्स ऑन योर पेंटिंग, कहीं ना कहीं तुम गलत हो जाते हो। नहीं तो after some time you don't feel to do it right. So I will suggest you stop somewhere so that you get a nice picture, or else you are going to ruin it if you work too much on pictures. I have done it many times. This is charcoal.